Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. There's a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is the Indian Express. So most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. So today is 3rd of February. The first topic is two new sites that has been declared as Ramsar Site. We'll see which are the two sites. Second, with regards to the low budget allocation in the union budget for children's. So the budget allocation for the children has not as expectation, right? The third news is second dose of the coverage for adolescents. The second last is India and Sri Lanka sign new loan agreement. And the last is an editorial that India, Britain free trade unlock the new opportunity. So we'll understand this editorial in detail. Apart from this, at the end of this video, there will be some MCQ questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And we have launched our app. This is newest version of app 2.0. You can get news blogs in this particular app. A to Z study material and daily MCQ. For more details, you can refer to the description down below. First news, that is two new sites declared as Ramsar Site. This particular news is important for General Studies Paper 3, Conservation, Environmental Pollution Degradation, and EIA, that is Environmental Impact Assessment. So which important site has been included? There are two sites. First is Khijadiya Bird Sanctuary, which is there in Jamnagar, Gujarat, and other is Bakhira Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh, right? So these were two important sites that has been listed under the Wetland of International Importance on the Ramsar Conventions. So this is a convention which protect the wetlands, and this is an international treaty for the conservation of sustainable of wetland. So this particular treaty ensure that there is a conservation and sustainable use of wetland in our country. This list is again very important for prelims examination. Now, the announcement by the Ramsar Secretariat, which is located in Iran, sometime this location also become important, has come as a eve of International Wetland Day, which is celebrated on February 2 every year. So with this, the total number of Ramsar sites in India goes up to 48. So this was asked in many times UPSC examination that what is the number of sites. So at this point of time, the total number is 48. Earlier it was 46. So additional of 2 make it 48. Now about World Wetland Day, which is celebrated on 2nd of February. This day mark as adaptations of Convention of Wetland, जहाँ पे 2nd February 1961 को Iranian city में रामसार के convention को adopt किया गया था. And the theme of the wetland this year was wetland action for people, nature, and aims to highlight the importance to conserve and sustain the wetland in India. And actually, the first celebration for the Wetland Day was there in 1997. Now, Khijadiya Bird Sanctuary की अगर बात करें, Khijadiya is located just 12 kilometers away from Jamnagar district, which is the headquarter, and there's a diverse offer of viewing or pleasure there in this particular region. The bird variety which is being found is to a larger extent, and also the marine and freshwater habitat that is absolutely marshy land है, mangroves हैं यहाँ पे, sand which is पाई जाती है, and even the farmland bordering the area is also there. Together, this ecosystem provide heaven for almost 220 species that are resident and some are also migratory. Now, Khijadiya की अगर बात करें, this is a part of Central Asian Flyway that has become 4th wetland in Gujarat under the Ramsar tag. So total Ramsar tags की अगर बात करें सिर्फ गुजरात में, the number is 4. Now the other wildlife sanctuary that has been added in Ramsar site is Bakhira Wildlife Sanctuary. This is a fresh water marshy area which is located in Sant Kabir Nagar district and the largest floodplain in the area of eastern UP. The sanctuary was a part in 1980 and it was protected under the Wildlife Protection Act 1972. अगर Bakhira Bird Sanctuary की अगर बात करें, this come into existence in 1990 actually. And this wetland is internationally important as bird life. It is support almost 80 species that is migratory and somewhere also inhabit to this particular location.
It provide wintering ground to almost 25 species जो कि central flyway है. Even some of are threatened, कुछ ऐसे endangered species like Egyptian vultures, spotted eagle and wool neck storks. These particular species are found in the Bakhira Wildlife Sanctuary. So these are the list of the Ramsar site. You can check state-wise Ramsar site. You can pause this video, you can read it out, or you can take a screenshot to read it much in a better way. So do check it out. These lists are very important and might be in prelims examination. They can ask you any location-wise questions also. Now the second news, that is low budget allocation for children in the Union Budget 2022. So the latest budget, which was presented by the Union Finance Ministry, has allocated less to the child education of children. So this is important for General Studies Paper 3, Indian Economy and Issues Related to Planning, Mobilization, Resource Growth and Development. So as per the Union Budget 2022 and 23, child की जो budget है, जो receive हुई है, that has got the lowest share in terms of financial allocation, and this is for the last 11 years. Right? In last 11 years इस तरह से देखी गई है कितनी गिरावट हुई है. According to the report, this is a report that has highlighted by the Hug Center, that is for Child Right. Hug Center for Child Right एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा है कि जो बजट एलोकेशंस मार्क की गई है बच्चों के लिए, दैट हैज रिमेन्ड बिलो 2.35% ऑफ द टोटल बजट. जो टोटल बजट जो थी उसमें सिर्फ 2.35% एलोकेशन हुई है बच्चों के लिए. Now the total allocation for children in absolute number has grew by 8.19%, right? जो कि ऑलमोस्ट 92,736 करोड़ थी, while ओवरऑल अगर यूनियन बजट की अगर बात करें इट हैज इंक्रीज बाय 13.25% in 2022 and 2023. This is a budget allocations. You can see this is presented by businesstoday.in. So you can see the shortfall. Earlier in 2012-13, it was close to 4.76 and gradually declining in this particular budget, it has reached up to 2.35. So this is a share of fund for the children in union budget of the latest budget, right? So it is close to 2.35. और ये आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है इसमें आपको शेयर पता चल रही है कि हर एक ईयर में टोटल बजट में कितनी शेयर रही है चिल्ड्रंस के लिए. नाउ सेक्टर वाइज एलोकेशंस की अगर बात करें, so for child health, this is the amount. For children educations, children development and child protection, these are the bifurcation of the amount that has been received, right? So color code indicate the basic bifurcation for the allocation of budget in the recent one. Now more about the report that was presented by the NGO. So the NGO says that lowest closures की गई है इस बार अगर देखी जाए जिस तरह से वेरिएशंस हुई है स्कूल क्लोजर्स की तो ये काफ़ी ज़्यादा थी और सीरियस न्यूट्रिशनल गैप्स भी देखे गए हैं बच्चों में. Loss of learning opportunities also there, and even because of digital divide many students were not able to access the right education. तो इस चीज़ों को देखते हुए इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए भी बजट में एलोकेशंस काफ़ी कम रही. Now further reduction in the share of the children budget, especially when countries battling with the COVID-19, makes situation more worse. So this is what the NGO Hug for Children has to highlight. Now as far as children development program is concerned, अगर देखी गई डिप के बारे में ड्रॉप जो देखी गई है, this is 10.97 in the allocation for the next year, and this include the supplementary nutritional and आंगनवाड़ी care services also. Scheme for the protection of welfare of child, that is under मिशन वात्सल्य जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है. इसकी जो एलोकेशंस हैं वो टोटल 1,472 करोड़ रुपीस है. Now second dose of coverage for adolescents. This particular news is important for General Studies Paper 2, issues related to development and management of health. तो इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली सारे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जो सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 है बच्चों की 15 से 17 के एज ग्रुप को वो भी जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की जाए. सो द गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू सून स्टार्ट द ज़ाइकोव डी. इवन 7 स्टेट्स में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू इसको भी स्टार्ट की जाएगी. अभी तक जो कोवैक्सीन है बाय भारत बायोटेक वॉज एडमिनिस्ट्रेड टू द चिल्ड्रन. So the states include where it is going to be started is Bihar, Jharkhand, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. So among these states जो सेकेंड डोज है उसको स्टार्ट करनी है और जो नई वैक्सीन है ज़ाइकोव डी की उसको भी इंक्लूड करने की बात कही गई है. डायरेक्टिव्स बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ सेक्रेटरी ने हर एक स्टेट्स को लेटर लिखा एंड दे आस्क्ड दैट दे नीड टू हैव अ
adequate measures in terms of protection against the virus, और जो protection for the vaccines हैं उनके recipients को find करने, identify करनी, and even how the things need to be taken in terms of providing adequate measures for the vaccines should be taken care. Hence, it is important that coverage of the second dose among the adolescents is reviewed at the level of state and union territories, right? तो जो भी district administration level पे management की जानी है, that should be taken place. Now, the health secretary has also asked the states to ensure the remaining adolescents populations get their first dose. जितने लोग बचे हुए हैं उनको भी उनकी first dose जितनी जल्द हो सके दी जानी चाहिए. Now, the COVID-19 vaccinations in 15 to age group has started in January 3rd. Basically, the Prime Minister has announced that January 3rd was the day that was selected. और ये administer की जा रही है सारी vaccine, that is Covaxin developed by Bharat Biotech, right? And interval of 28 days is mandatory for the vaccines, right? हर एक जैसे कि normal vaccines में almost अलग अलग days रखी गई हैं. For children, the days interval is 28. And according to Health Ministry, India has administered around 166 crore doses of the vaccine to the population, right? ये world में highest अभी तक की vaccination है जो कि कहीं भी हुई है. Almost 166 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. Now, India-Sri Lanka Shine Loan Agreement. This particular news is important for General Studies Paper 2, India and its neighborhood relations. So, understanding the ground reality in Sri Lanka, we have seen that Sri Lanka has been witnessing a huge debt because they have taken a lot more amount from China. तो debt जो है वो continued है because China ने उनको इतनी लोन दी है उनको वापस repayment करना मुश्किल हो रहा है. So India has extended 500 million line of credit for purchasing petroleum products to Sri Lanka, जो कि currently एक worst economic exchange और energy crisis से गूंज रहा है. Now, Sri Lanka government is expected to invite bids for Indian supplier to facilitate and even finalize its imports. तो multiple line of credit India ने दी है, not this time only, like जब से situation खराब हुई उससे पहले इंडिया ने line of credit start किया. The line of credit span between a nominal interest rate of 2%. This is what line of credit actually mean. मैं आपको बताऊंगा line of credit क्या होती है. Sri Lanka government is expected to invite bids from Indian suppliers soon to finalize its imports. And recently, in January 2022, India extended 400 million currency swap to Sri Lanka, also deferring around 500 million due, जो कि एक एशियन क्लियरेंस यूनियन जो है उसके हेल्प के थ्रू हेल्प दी गई है श्रीलंका को. These are all the settlement that would be done by the Asian clearing unions. So definitely being an immediate neighbor, इंडिया ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया श्रीलंका को, बट वी सी दैट हाउ थिंग इज गोइंग टू ओवरकम बिकॉज द डेट दैट इज अंडरलाइनिंग इन श्रीलंका इज वेरी हाई एंड वेरी ह्यूज. अबाउट लाइन ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें, क्या होती है लाइन ऑफ क्रेडिट, हाउ डज इट वर्क. लाइन ऑफ क्रेडिट एक फैसिलिटी है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट को देती है या किसी बिजनेस एंटिटी को देती है या फिर एक किसी इंडिविजुअल को देती है, जो इनेबल करती है कस्टमर को एक मैक्सिमम लोन विड्रॉ करने के लिए. इसके इंटरेस्ट रेट काफ़ी मिनिमल होते हैं, दैट इज 1 to 3% के बिटवीन. जो इंडिया ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, दिस इज अराउंड 2%. एंड द बोरोवर कैन एक्सेस टू द लाइन ऑफ क्रेडिट एनी टाइम एंड इट डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट. और जो लाइन सेट है, जो क्रेडिट अमाउंट सेट है, जो टाइमलाइन सेट है, उसके अंदर उनको वापस रीपेमेंट करनी होती है. Now, Inc. India Britain Free Trade Unlock New Opportunity. This particular editorial is important for General Studies Paper 2. Bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. So under this editorial, we'll discuss the 4 important subheads or subtopics, that is free trade agreement, business in both countries, advantages of ट्रेड एग्रीमेंट और क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है. तो पूरी एडिटोरियल की जो फोकस है दैट इज बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूके, राइट. दिस एडिटोरियल इज रिटन बाय एलिस एंड ही इज अ हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन इन इंडिया. So last year in May 2021, ये देखा गया है कि both India और United Kingdom has announced a shared vision of transformative decay for the bilateral relationship और bilateral partnership. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ने दोनों लीडर ने एक एम्बिशन सेट की थी जहाँ पे डबल बायलैटरल ट्रेड करने की बात की गई है बाय 2030, राइट. एंड इंडिया एंड यूके इज डेफिनेटली शेयरिंग अ लॉट मोर बायलैटरल रिलेशनशिप, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, बहुत सारे ऐसे MOU है जो कि साइन किए गए. तो टोटल वैल्यू जो है दैट इज 23 बिलियन euros in 2019. Now FTA की अगर बात करें, how the FTA is going to help in this particular country.
So both country had decided to take rapid step to reduce the trade barriers, right? जहाँ पे ग्राउंड वर्क की अगर बात करें, जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट हैज एक्चुअली बिगन बाय द एंड ऑफ 2021। कोविड के बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के साथ इंडिया के जो FTA एग्रीमेंट थे वो डिले हुई हैं। Now, the best next big step is to have a FTA negotiation last month, right? Recently जो visit हुई थी वहाँ पे इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं और यूके के फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनके बीच में एग्रीमेंट हुई है where this FTA would strengthen both in terms of bilateral relationship और जो ट्रेड सरप्लस है उनमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। So there is nearly 600 UK companies that is एम्प्लॉइंग ऑलमोस्ट 3,20,000 पीपल इन इंडिया। तो इतनी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और उनके कुछ एम्प्लॉयज़ जो उनके वहाँ के नेशनल लोग हैं वो यहाँ पे इंडिया में रह रहे काम कर रहे हैं। दिस इंक्लूड बार्कलेस फाइनेंस, बहुत बड़ी कंपनी है जिनकी ऑफिस लंदन के अलावा सिर्फ पुणे में सेटअप की गई है। Now the consumer giant Hindustan Unilever had headquartered in Mumbai, where again the British company is supporting India's vision of Atmanirbhar Bharat. You can see the investment is large. जितने लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया के भी काफ़ी लोग हैं जो यूके में भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं. So there's both vice versa that people are working and benefiting both countries' economy. Now, business in both nations की अगर बात करें, similarly, India is already a big investor to UK, especially a dynamic sector such as fintech, electric vehicles और batteries में काम कर रहे हैं. And in 2020 and 21, India was UK's second largest source of investment in number of projects. Right? तो इंडिया की जो प्रेजेंस है यूके में काफ़ी अच्छी है. जस्ट लास्ट वीक जो SR ग्रुप है उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक, ओला के आप जानते होंगे, ओला हैज़ बीन इन टू द सर्विसेज ऑफ कैब, तो ओला इलेक्ट्रिक के साथ ये सब प्रोवाइड की गई है एक एग्रीमेंट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी यूके में. इंडियन गवर्नमेंट इज शोइंग इट्स डिटर्मिनेशंस टू सेट अ न्यू स्टेट ऑफ ट्रैक. And India is an extraordinary opportunity to transform economy in social for the next 30 years. किस तरह से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करनी है, जो इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आने वाले 30 साल में दोनों कंट्रीज के बीच में ये देखी जा सकती है. Advantages of the trade agreement, how this trade agreement is going to benefit both India and trade agreement between UK will stimulate the employment in both countries. और अगर यूके की बात करें, इनकी एनालिसिस ये कहती है कि अगर एफटीए बढ़ेगी तो वहाँ पे अमाउंट जो ओवरऑल जीटीपी की कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें कलेक्शंस भी बढ़ेंगे बाय 2035 विच इज एस्टिमेटेड अराउंड 14.8 यूरोस बिलियन. एंड अ ट्रेड डील इज अ डाइवर्स, जहाँ पे एक ऐसी चेंज बनाई जाएगी जहाँ के चीपर बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर वुड बी ईजी. लोअर बैरियर कपल्ड की जाएगी विद रेगुलेटरी incentives where medium-sized enterprises and export of goods and services will be promoted. So definitely अगर बात करें जो procedures हैं, जो legal terms and conditions हैं, वो भी easy की गई है ताकि जो trade agreements हैं वो दोनों countries और companies के बीच में establish की जा सके. Now way forward की अगर बात करें, free trade agreement is definitely the FTA would mark as the era जहाँ पे दोनों countries के बीच में एक बहुत ही important landmark जर्नी स्टार्ट की जा सकती है. एंड इवन बाय 2030 एंड इवन डाउन द लाइन 2050 बहुत अच्छी अचीवमेंट हो सकती है. एंड इट गिव न्यू फ्रेमवर्क विच टू कंट्रीज कैन फ्लरिश टुगेदर एंड यूके एंड इंडिया कैन शेप द नेक्स्ट 25 ईयर एज अ डेस्टिनी विच कॉल फॉर इक्वल एंड फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनर. राइट, ऑल्दो यूके ने भी ये क्लियर किया है कि वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में एंगेज करना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी के साथ जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें पूरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं. सो दिस इज हाउ द वे फॉरवर्ड कैन कंटिन्यू. Moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday's question. For first question, the correct option is B. For second question, the correct option is C. Today's MCQ for practice, आपको बताना है which among the following has recently released the COVID-19 Performance Index? Harvard University, Serum Institute of India, Lowy Institute और World Health Organization. अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चेक कर लें कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस. Second question for practice, the fourth edition of Future Investment Initiative Forum was hosted by in which city? So this is Sweden, Laos, Riyadh or New Delhi. So do check it out, which among the following is the correct answer. This you have to do as a homework. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.